Next question, question number 5. If the sum of the zeros of the quadratic polynomial ft equal to kt square plus 2t plus 3k is equal to their product, then find the value of k. Here we have a quadratic polynomial in variable t. Let alpha, beta are the zeros of quadratic polynomial. Ft equal to kt square plus 2t plus 3k. Now here we are using the relation between zeros and coefficient. Sum of the zeros equal to minus coefficient of linear term upon coefficient of x स्क्वेयर यानी कि टी स्क्वेयर. यहाँ पर वेरिएबल है हमारे पास t यानी माइनस 2/k एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा 3k अपॉन k यानी इक्वल टू 3 एंड गिवन कंडीशन द सम ऑफ द zeros of the quadratic polynomial is equal to their product यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा it is given. ठीक है. now apply this condition यानी कि 3 into minus 2/k. now k value is minus 2/3. क्लियर है बस सभी को. जस्ट हमने रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज का यूज़ किया है.